video I have taught you how to calculate potential energy, electrostatic potential energy of a system of a group of charges. This part comprising of two videos. First video was in the absence of external electric field, whereas in the next video I have taught the same concept but in the presence of external electric field. So as to analyze both of the concept in the absence of, means when no external electric field, as well as in the presence of an external field, there is an NCERT example, that is example number 2.5. So as to learn about previous two topics, let's start today's video, that is based on numerical section. So numerical, determine the electrostatic potential energy. What does it mean? We have to find out electrostatic potential energy of a system of a group of charges that containing two charges. It means the system is comprising of more than two or equal to two charges, and in our present example there are two charges. First charge 7 microcoulomb and the second charge minus 2 microcoulomb, and they are located at this and this position respectively. It means there are two charges, first charge and second charge. As per the location, for the first charge x is negative, y and z 0. You know when y 0, z 0, it means we are on the x axis towards negative x. So, and the second one 9 0 0, y 0, z 0, but x is positive, so it is towards the right hand side of the origin. So, let's draw, that is its position A, at which first charge, that is 7 microcoulomb, first charge Q1 is located, and the location is minus 9 0 0. Let it be origin. As it is origin, minus 9 towards left, plus 9 towards right at equal distance. So take another point B, at which second charge, that is minus 2 microcoulomb, is located at position 9 0 0. We have to find out in the first part electrostatic potential energy U of the system, but in the absence of any external electric field. As there is no external electric field, it means what? The potential energy is only due to mutual interaction, due to the interaction between these two charges, that is given by Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R. The first charge, second charge, separation between two charges, and it is our electrostatic force constant. As you know, the value of electrostatic force constant, that is also denoted by K, its value is 1 upon 4 pi epsilon naught. Its value is fixed 9 into 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square. So substituting various value, you can find out the potential energy. Potential and potential energy both are scalar. Potential and potential energy both are scalar function. So while evaluating these two terms, जब भी आप potential या potential energy को find out करना लगेंगे, you have to consider sign. Sign को consider करना है. Okay, this point must be noted, otherwise जो आपका result है वो mismatch करेगा. So let's put value. Q1 is 7 microcoulomb. Micro means 10 raised to power minus 6. Q2 is minus 2 microcoulomb. Minus 2 into 10 raised to power minus 6 upon 4 pi epsilon naught. 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to power 9. So putting value upon R. The separation between these two is, one is towards left, second one is towards right, and the separation is 18 centimeter. So I can put here that R is equal to 18 centimeter, 18 into 10 raised to power minus 2 meter. So putting value 18 into 10 raised to power minus 2 meter. 9 ones are 9 twos are 2 twos are cancel. Now overall it will be, here it is minus sign, minus 7, minus 6, minus 6, 12, 12, minus 12, minus 12 plus 9, minus 3, and it's plus 2, minus 1, minus 7 into 10 raised to power minus 1. And what is the unit of potential energy? For any type of unit and of energy, the unit is same, that is joule. So result is minus 0.7 joule.
Here potential energy is coming out to be negative. What does negative potential energy indicate? When potential energy is negative, it means these two charges comprising a system. Why? Due to mutual attraction. This one is negative, this one is positive. So due to mutual attraction, it is comprising. So its potential energy is negative. Or we can say when these two charges are coming close to each other, they are forming a bond. So during bond formation, energy is released. So potential energy is negative, minus 0.7 joule. Let's do second part, that is B. In B, how much work is required to separate the two charges infinitely away from each other? अगर आप इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को, ग्रुप ऑफ चार्जेस को जो यहाँ पर लोकेट है, यू वांट टू मूव देम इनफाइनाइटली अपार्ट, जब वो इनफाइनाइट अपार्ट हो जाएंगे तो देयर विल बी नो इंटरेक्शन, नो पोटेंशियल एनर्जी. इट मीन्स at infinity final potential energy will be zero. Why? Because at infinity there is no interaction, no attraction. So at infinity final potential energy is zero. But the question is how much work is required. कितना वर्क चाहिए ताकि आप इस सिस्टम को जो कितने सेंटीमीटर पर है, 18 सेंटीमीटर की सेपरेशन पे, आप इन्हें इनफाइनाइट सेपरेशन पे रखना चाहते हैं. वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू. डेल्टा रिप्रेजेंट हियर चेंज, एंड चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, यूएफ माइनस यूआई. व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? जीरो. व्हाई जीरो? Because at finally they will be infinite away from each other, so potential energy will be zero. What is initial? Initial you have already calculated, that is minus 0.7. 0 minus 0.7, it means what? 0 plus 0.7, 0.7. And work and energy are having same unit, so its unit will be joule. So work done is 0.7 joule. Now coming to the last part, that is part number C. Suppose now the same system, this one system is placed in an external electric field. जब आप इसी सिस्टम को उठाकर किसी एक ऐसे प्लेस में, एक ऐसी पोजीशन में रख रहे हैं जहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? A into 1/r², और A की वैल्यू भी आपको गिवन है, दैट इज सम कांस्टेंट. What would be the electrostatic potential energy? अब न्यू सिचुएशन में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, हमें वो कैलकुलेट करनी है. इट मीन्स अब हम अपने इसी सेक्शन को चेंज कर रहे हैं, बट किस फॉर्म में? इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब भी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में बात करते हैं तो इट मीन्स यहाँ पर दो पार्ट है. एक तो जो पहले वाली एनर्जी थी वो तो है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन. प्लस में फर्स्ट चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, सेकंड चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या इंटरेक्शन है वो भी यहाँ पर आ जाएगी. इट मीन्स टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस विल बी फर्स्ट चार्ज और उसका पोटेंशियल के साथ इंटरेक्शन, उसकी पोजीशन पर क्या पोटेंशियल है उसके साथ इंटरेक्शन. बिकॉज यू नो पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल. फर्स्ट चार्ज इंटू फर्स्ट चार्ज की पोजीशन पर पोटेंशियल, सेकंड चार्ज इंटू सेकंड चार्ज की पोजीशन पर पोटेंशियल. ये तो दोनों चार्ज को हमने फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर दिया. प्लस में जब पोटेंशियल नहीं था, फील्ड नहीं थी, उनकी म्यूचुअल इंटरेक्शन का क्या था? दैट इज Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. You have already calculated this value, that is minus 0.7 joule. तो इट मीन्स आप इसको तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो अब आपके पास क्या पर्पस रह गया? यू वांट टू इवैल्यूएट दिस सेक्शन, तो आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए. पोटेंशियल इज नॉट गिवन टू यू. क्या गिवन है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में एक रिलेशन है. उस रिलेशन को आप यहाँ पर याद करेंगे. क्या है? द रिलेशन इज E, दैट इज इक्वल टू माइनस dV/dr. वी वांट टू इवैल्यूएट dV. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dV? dV इज इक्वल टू माइनस E dr.
but we do not want to find out dV. We want V. V can be evaluated by integrating dV. Minus E dr. What is the value of E? E is A into 1 by r square. A into 1 by dr. और फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का? x रेज टू पावर n इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू ओल्ड पावर प्लस 1 अपॉन न्यू पावर. और यहाँ पर हमारे पास ओल्ड पावर क्या है? -2. -2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? -1. और आप -1 से ही डिवाइड करेंगे. -a इंटू आर रेज टू दी पावर -1 और एक -1 से न्यू पावर से डिवाइड किया. माइनस कैंसल विद माइनस, सो इट विल बी a बाय आर. तो आपको क्या पता चला? पोटेंशियल की वैल्यू तो a बाय आर है. इट मीन्स वो r पे डिपेंड करता है. यू नो पोटेंशियल इज ऑलवेज पोजीशन डिपेंडेंट. तो अब आप यहाँ पे पुट करेंगे. इट विल बी इक्वल टू q1 इंटू a बाय r1 प्लस सेकेंड चार्ज के लिए q2 इंटू a बाय r2 प्लस में म्यूचुअल इंटरेक्शन का यू नो इट्स वैल्यू इज -0.7. ओके, अब वैल्यूज को पुट करें. व्हाट इज q1? फर्स्ट चार्ज 7 माइक्रोकूलम. 7 माइक्रोकूलम 7 into 10 raised to power -6. What is A? A is 9 into 10 raised to power 5. 9 into 10 raised to power -5. Okay. What is its position? Its position is -9 centimeter. -9 into 10 raised to power -. Now, second part. Plus Q2, second charge. What is second charge? -2 microcoulomb. It means -2 into 10 raised to power -6 microcoulomb. अब हमने A की वैल्यू को पुट करना है और A की वैल्यू क्या है? फिक्स है. 9 into 10 raised to power 5 upon R2. What is R2? That is 9 into 10 raised to power minus third part, that is 0.7. 9 cancel with 9. When 9 cancel with 9, you will get the result, that is 9 cancel with 9. 7 into 10 raised to power -6 -5 -11 -11. 9 into 10 raised to power +5 it is, because it is 9 into 10 raised to power +5. 7 into 10 raised to the power 1, because -6 plus 5 it will be -1. -2 जब आप नोमिनेटर में भेजेंगे तो it will be +2. -1 plus 2 will be +1. Now next minus 2 into -6 plus 5. -6 plus 5 it will be -1 और ये -2 जाएगा तो +2 बन जाएगा. -1 plus 2 it will be 10 raised to power 1 minus 0.7. 7 10s are 70. 2 10s are 20. Minus 0.7. What it will be? It will be 70 minus 20, 50. 50 minus 0.7, it will be equal to 49.3 joules. So, in the presence of external electric field, its potential energy is 49.3, and in the absence of external electric field, it is minus 0.7 joule. So in this way we have calculated potential energy in the absence, in the presence, both have been discussed here. In my next video I am going to teach you how to calculate potential energy in the presence of external field by dipole. So be with me in next video. Till then, good.